Viewers, you're watching the biggest story tonight. I'm Shivangi Shukla. The countdown has begun for the G20 Summit. Delhi is all decked up and preparations are full swing. We are seeing massive security arrangements as well. We'll get you all the details, but first the headlines. We're tracking on the biggest story tonight. In cabinet meeting, Prime Minister Modi tells ministers counter-attack on Sanatan strongly, instructs ministers to defend Sanatan. Despite massive backlash, Congress President son and ally DMK refuses to apologize for Sanatan insult. Anger mounts across India over insult to Sanatan Dharma. Hindus demand apology from Congress and the DMK. After G20 invite, badges at the global event mentions Bharat instead of India. Congress objects to the use of word Bharat. External Affairs Minister gives it back to Congress, says Bharat is mentioned in our constitution. The Prime Minister spells out a set of do's and don'ts for ministers during the G20, asks them to ditch official vehicles and use the shuttle service to reach Bharat Mandapam. UK High Commissioner to India speaks to the Republic, says high expectations from the summit. Viewers, a massive storm over the Sanatan insult can be seen. Sources suggest that when the issue of Sanatan insult was brought up, Prime Minister instructed the ministers to defend Sanatan strongly. Prime Minister reportedly asked ministers to be firm in defending Sanatan. This comes as Congress President's son, along with allied DMK chief Stalin's son, has led the attack on Sanatan Dharma and has, I repeat, has refused to apologize despite massive backlash. Now, what we are seeing right now, viewers, remember that even Republic TV confronted Udayanidhi Stalin, where he refused to apologize and said that if there are problems with Sanatan Dharma, then he will point them out. Let's listen in to the comments that sparked the entire controversy in the first place. Anybody can actually say, democratically about anything, but they have to keep everybody's sentiments in check as well. But if you are going to issue a death threat to anybody who says anything, what's the difference between you and the other radicals? You are proving them right. Just because somebody said something, and you are going to issue a death threat of and put a bounty on their head of 10 crore, how different are you from the other radicals? Doesn't your religion teach mercy? Doesn't it teach equality? ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். And viewers, Assam Chief Minister had raised strong objections to the Sanatan insult by Congress and its ally. Let's listen to the reactions coming in, where we are seeing a big backlash coming in against Udayanidhi Stalin's statement all across the nation. Do you think that the Gandhi Parivar-led Congress party appears to be so very uncomfortable with what one would say a continuum of our civilization? You see, that Gandhi family is a very, very typical family. It is very, it needs a whole research team
to see what they are actually. They will say that they are Kashmiri Brahmin. And before Madhya Pradesh election, they will go to temple. Before Rajasthan election, they will go to temple. But the next day, they will encourage their own party president Mallikarjun Kharge to say that Sanatan is bad. His son will be encouraged to say that annihilate Sanatan. Then the next day, Karti Chidambaram will be encouraged to say that annihilate Sanatan. Next day, Mr. Venugopal will be encouraged to say that whatever Udayinidhi Stalin's statement, that's reflection of his freedom of speech. Now, I'll ask them, if I issue a statement that because Islam has something which is not very, very kind to women, that is why you annihilate Islam, will Congress will be kind to me? If I say that Christianity sometimes promote certain things which may not be pure Bharatiya, so that is why denounce Christianity, will Congress party will spare me? No. So, for BJP, for us, we will not denounce Hinduism, we will not denounce Islam, we will not denounce Christianity, because these are religion, and you can have your views on religion, but you cannot say annihilate Islam, annihilate Christian, annihilate Hinduism. Now, when it is said against Hindu, they will justify it. But if they say against the same thing against Islam and Christian, they will say, look, he should be booked, cases should be filed, he is communal, he is going to divide this country, BJP is like that. So that's the psychology of Rahul Gandhi and the Gandhi family. Anything Hindu, it is fine. Anything against Hindu, justifiable. Anything against Bharat, justifiable. But don't say anything against don't say anything against Islam, don't say anything against Christianity, don't say anything against the so-called Nehru family. So that's their logic. They don't believe in Article 14. So my stand on Hinduism, that do not annihilate Hinduism, I will say do not annihilate Islam. I will say do not annihilate Christian. We have not created that religion and we have no right to annihilate. We have right to differ. एनडीआई है कि राष्ट्रीय विरोधी जो भी बातें हैं उसको आगे बढ़ाने का एक प्लेटफार्म है, और ये प्रायोजित तरीके से ही, जैसे खड़गे जी ने स्वयं कहा था सनातन धर्म आएगा, अगर मोदी आ गया सनातन धर्म आ जाएगा, उसके बेटे ने कहा सनातन धर्म के अगेंस्ट कहा, इसी प्रकार से अपने तमिलनाडु में निधि ने कहा, और इस प्रकार से चारों तरफ से जो हो रहा है इसका प्रायोजित है सबका कि किसी प्रकार से देश की एकता अखंडता को तोड़ा जाए, किसी प्रकार से देश को रोका जाए, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के अंदर हिंदुस्तान कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. See, dharma is for everybody. The real religion is a way of life with different thought processes, different things are there. So one should understand the basic advent of religion in this world, thousands of years ago. Why religion has come, and what was there before religion, and what has happened after religion. So if somebody studies that, then it's very well known that Sanatan Dharma is for everybody. They want to come to power at the cost of not only unity of the nation, even the social fabric, which is there, very peaceful social fabric there in this country. At the cost of social fabric, they are trying to promote themselves to come to power. And that is, this agenda is one part of that. We have seen the manner in which every ally of the India alliance has taken pleasure in attacking Hindu faith, Hindu Astha and Sanatan Dharma, which means only one thing, that in Mumbai, the clear-cut discussion and agenda was that Hindu ko do gali, taki mile vote bank ki tali. If not, will the Congress party now tell us that those who claim to be Janudhari Hindus, those who see Shri Krishna in their dreams,
will they act and speak against G. Parameshwar? Would this be said about any other religion? Why is it that somebody wants to eliminate Sanatan and somebody questions the very existence and the very origin of Hindu religion? No other religion is subjected to this. This is the true face of Congress and India alliance. It's a Hindu Virodhi alliance. सनातन धर्म डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। डिस्क्रिमिनेट करना वो धर्म नहीं है। डिस्क्रिमिनेट करना अधर्म होता है। सनातन धर्म का मौल्य है विश्व एक कुटुंब है, वो सनातन धर्म का मौल्य है। सबको भगवान के रूप में देखना सनातन धर्म का मौल्य है। केवल मनुष्य मात्र के लिए ऐसा नहीं कहा, प्राणी पक्षी जड़ और चेतनों के साथ में भी ऐसा व्यवहार किया अपना पूर्वज ने, उसको सनातन धर्म कहता है। ये जातिवाद सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। क्या निकालना चाहता है? जातिवाद निकालना चाहता है तो हमको सपोर्ट, हमारा सपोर्ट भी है उनको। धर्म निकालना चाहता है तो उसके खिलाफ हम हैं। धर्म के तरफ से हम लड़ेंगे। धर्म अलग है, जातिवाद अलग है, मत संप्रदाय अलग है। संप्रदायवादी बुरा हो सकता है, धर्मनिष्ठा बुरा नहीं होता है। हाँ, आज का दिन मत और धर्म को एक ही तरफ से देख रहा है, उसके वजह से गलती हो रहा है। रिलीजन अलग है, धर्म अलग है। बहुत चर्चा करने का विषय है। प्रियंक खरगे को एक बात बोलना चाहता हूँ, खरगे जी आप जातिवाद के खिलाफ है तो पहले आप जाति छोड़ करके जातिवाद के खिलाफ लड़ना होता है। आप जाति का पोर्ट के अंदर छुपा के जातिवाद के खिलाफ लड़ नहीं सकता। सनातन धर्म पे जो डिबेट है वो बढ़ती ही जा रही है। हम रोज देखते हैं कि इंडिया ब्लॉक का कोई एक मेंबर आके फिर कोई आपत्तिजनक बात करता है। कल डीएमके के एक लीडर ने बोला कि सनातन अनएजुकेटेड लोगों के लिए है, यूपी बिहार से आने वाले लोगों के लिए। कैसे देखते हैं ये स्टेटमेंट सर? ऐसा बोलने वाला उससे बड़ा कोई अनएजुकेटेड, अशिक्षित, मूर्ख और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये लोग अपनी मूर्खता का खुद ही परिचय दे रहे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो तमिलनाडु के हैं तो तमिलनाडु के लोग ही इनको मूर्ख समझने लगे हैं। तमिलनाडु की संस्कृति, वहीं का सेंगोल आज संसद में प्रतिष्ठापित हुआ है। तो ये जो कुछ लोग हैं जिनकी मति इसलिए भ्रष्ट हो गई है क्योंकि उनको तमिलनाडु से विदाई होनी है। अब वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाकी सनातन का ये परिचय है कि आपके इतने नफरत वाले बयान के बाद भी हमें आप पे हंसी आएगी, हमें आप पे क्रोध नहीं आएगा। आपकी मूर्खता पे हंसी आ रही है जो ऐसा बोल रहे हैं सनातन के विरुद्ध, और हमें तरस आ रहा है कि ऐसे लोग जो तमिलनाडु की सरकार में हैं वो तमिलनाडु के लोगों का विकास कैसे रोक रहे होंगे, आध्यात्मिक, बौद्धिक। तो ये हमारी जो पुरानी समय से ना जड़ और चेतन की कल्पना है। तो ऐसे जड़ लोगों को उनको अपनी हालत पे छोड़ देना चाहिए। And viewers, a day after controversy over President's G20 invite that read President of Bharat, the BJP leaders have tweeted pictures of the ASEAN catalogue that mentions Prime Minister of Bharat. Republic has information that the G20 badges will also read Bharat instead of India. That's right. This seems to have riled the opposition once again, as Congress has alleged that the BJP is trying to change the name of India, to which the External Affairs Minister Jaishankar has given it back to the opposition by citing the Constitution.
here is the entire political face-off that we are seeing over the President's G20 invite that reads President of Bharat. The invitation card which says Bharat and not India. Now that is the latest thing, that is G20 going to reposition India as Bharat and not India as India? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. So it's not something which is new, it is something which existed in the constitution, and so you didn't do, it's not a new roll of dice. No, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. इसको कहते हैं जब उल्टी पड़े तो पैर वापस खींच लो। यही तो मैं कल से समझा रहा हूं कि इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों बहुत सोच समझ के विचार विमर्श करके सिर्फ एक बार नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 बार ये मैटर जा चुका, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार किया, कई बार लोकसभा राज्यसभा में इस पे प्राइवेट बिल आए, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो ये इतिहास पढ़ें। मैं तो विदेश मंत्री जो कह रहे हैं लोग संविधान पढ़ें, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा इतिहास पढ़िए। आपका इतिहास बड़ा कमज़ोर है, इसीलिए आपने बंटाधार कर दिया है विदेश नीति का, भारत के कचरा कर दिया है आपने। आप बहुत ही असफल विदेश मंत्री साबित हुए हैं। और मैं ये भी कहूँगा कायराना भाषण आपने दिलाया है देश के नेतृत्व से, चीन को लेकर, लद्दाख की सीमा पर। हम तो ये कह ही रहे हैं कि जिसको इस्तेमाल करना हो, प्रयोग करना हो, भारत प्रयोग करे, और जिसे प्रयोग करना हो इंडिया करे। पर जो ये आपके कुछ लोग बोलने लगे थे, आप ही के सांसद, करिए ना कार्रवाई उनके खिलाफ कि भारत रह जाए, इंडिया निकाल दिया जाए। उस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया थी। जब आप ही लौट के घर चले गए तो काहे की चर्चा, भारत और इंडिया रहे। लेकिन हाँ, एक दिन चर्चा महंगाई पे नहीं हुई, बेरोजगारी पे नहीं हुई। जिस तरह आपका फेल्योर हो रहा है कि चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, रूस के सब कुछ पुतिन जी नहीं आ रहे हैं, वो हाँ एक दिन रुका रहा। तो चिंता मत करिए, हम लोगों की याददाश्त बहुत तेज है, फिर उभारेंगे। सर, हमने देखा है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ऐसे नोटिफिकेशंस आए हैं, इनविटेशन आए हैं, बल्कि कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया ब्लॉक जो है वो ये कह रहा है कि उनके नाम से भयभीत होकर ये डिसीजन लिया जाए। देखो, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस 2 कार्यकालों में और आने वाले दिनों में भी कई बड़े फैसले, कई कड़े फैसले और कई ऐसे फैसले जिसे कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसको उन्होंने किया है। इसलिए जो है वो किसी से नरेंद्र मोदी जी ना डरने वाले हैं, इसलिए किसी को इस बात की गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है, जो देश में हित में है वो बिना रुके हुए, बिना थके हुए, बिना समझौते के उसको करने पर, वो उसको पूरा करने पर वो नहीं है, उनका यकीन होता है। Viewers, much more coming up on the biggest story tonight. Prime Minister spells out a set of do's and don'ts for ministers during the G20, asks them to ditch official vehicles and use the shuttle service to reach Bharat Mandapam. Plus, UK High Commissioner to India speaks to the Republic, says high expectations from summit. Stay tuned.